Hello students, how are you? So in our previous video, we discussed an important and exclusive process pertaining to angiosperms, that is endosperm formation by triple fusion method and zygote formation in the embryo sac, two fertilization occurring simultaneously in the embryo sac. This double fertilization and triple fusions are characteristics of angiosperms. Now what happens after fertilization? What are the events? Now today our discussion is pertaining to this topic, post-fertilization structures and events. What structures are formed after fertilization and what are the events which are going on inside the embryo cell. Now let us pay attention to this embryo sac. This embryo sac has undergone two processes, triple fusions, two polar nuclei and one of the male gametic nucleus has fused with this and has three fusions, triple fusions, two of polar nuclei and one of the male gametic nucleus occurred to produce a 3N structure called PEN, primary endosperm nucleus. So this endosperm nucleus then is considered the nucleus of central cell. This is embryo sac cell, main cell called central cell. Now this cell is primary endosperm cell. Now embryo sac is representing primary endosperm cell by triploid structure. Now towards the micropylar end. Since fertilization, true fertilization process has occurred and zygote formation has occurred and one of the synergids has got destroyed. They are degenerating synergids and only zygote is present towards the micropylar end. This is micropylar end. And what left is on the chalaza end, three antipodal cells which are also degenerating. Now this structure, which has been produced by special phenomena, triple fusion and double fertilization, characteristics of angiosperms. So after fertilization, post fertilization events, first event is endosperm formation, this event, and second is embryo formation. Now let us discuss in detail about endosperm formation. So endosperm, as you know, is a triploid nutritive tissue. It always precedes embryo formation. क्यों? Why? Reason है because एम्ब्रियो को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय बहुत सामान, बहुत न्यूट्रिशन की जरूरत है, इसलिए उसका प्रबंध पहले किया जाता है. So endosperm formation always precedes embryo formation. So it can be further of 2-3 types. Free nuclear type of endosperm formation. What does it mean? You can see that in this embryo sac, this central cell which represents primary endosperm cell, its nucleus divides, again divides, again divides. Only the nuclei, they are going towards the periphery. Zygote formation is going to proceed for embryo formation. These cells are degenerating. सिर्फ किसका साम्राज्य है embryo sac में? इस central cell, so called primary endosperm cell. So what does it do? It divides the nucleus, sends it to the periphery, but no cytoplasmic division occurs.
So a sort of what type of structure is formed? Nuclei, they are present on the periphery of this central cell, and after some time the nuclei, they get separated by wall formation, and then it becomes cellular. But in coconut you can see on the free nuclear stage. कोकोनट मिल्क, नारियल का पानी क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ कोकोनट, सॉरी, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। और जब उसमें नारियल सफेद गरी बन जाती है, सॉलिड, उसको मीट ऑफ एंडोस्पर्म कहते हैं, तब ये दोनों स्ट्रक्चर शो कर रहा है। फ्री न्यूक्लियर जो उसका पानी है, और सेलुलर जो उसके बाद मीट ऑफ एंडोस्पर्म बन गया है। उसमें इतनी न्यूट्रिशन है, इट इज हाईली न्यूट्रिटिव, इसलिए नारियल पानी को बहुत हाईली न्यूट्रिटिव माना गया है, बिकॉज इट इज रिच इन हाई क्लास प्रोटीन्स, लिपिड्स and carbohydrates. So very good nutritive fluid. And during dehydration it is also served. In petunia type of plants, tatura, you will find as soon as the nucleus of this central cell divides, immediately it divides by cytokinesis. साथ के साथ ही हिसाब हो जाता है, सेल्स बनते जाते हैं, इसलिए दिस इज सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। हेलोबियल टाइप इज इंटरमीडिएट, जो कि एस्पोडोलस में है। सो 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशंस हैं। बट एंडोस्पर्म ने क्या किया है, आने के फर्दर डेवलपमेंट के लिए क्या इंश्योर कर दिया है कि फूड सफिशिएंट है, एम्ब्रियो बन सकता है जाइगोट से। तो सेकेंड इवेंट इज एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम zygote, that is called embryogeny. Now this embryogeny process is same in both monocots and dicots in their initial stages. So for example, we are focusing this as zygote. zygote की ओरिएंटेशन जरूर समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ये माइक्रोबाइलर एंड है, इसके साइड है, और ये इस जाइगोट की चालाजल साइड है। ये जाइगोट ऐसे ट्रांसवर्सली 2 में डिवाइड होता है, और एक अपर टियर, अपर सेल, और नीचे वाला लोअर सेल, 2 सेल स्टेज में आ गया जाइगोट। अपर सेल की डेस्टिनी क्या है? सस्पेंसर बनाना, डंडी बनाना, ताकि ये डंडी से इसको, इस सस्पेंसर से इसमें इसको ठूंसता रहे इनसाइड द सेंट्रल सेल एम्ब्रियो सेक, एंड सो दैट इसको न्यूट्रिशन मिलती रहे। बट द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम द लोअर hypodermal cell. This cell divides and redivides to form mass of cells. So the side which is towards the suspensor, that becomes radicle. So future root system will develop from that, and the opposite side will become plumule. यहाँ तक मोनोकोट्स और डाइकोट्स में सेम पैटर्न है एम्ब्रियोजेनेसिस का। बट अगर ये इसको डाइकोटिलिडनस बनना है, तो ये इससे ऐसे, इसमें क्या है, यू विल फाइंड दैट इन दिस पिक्चर। सो 2 कोटिलिडन्स आर प्रोड्यूस्ड इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर से। तो देखिए ये 2 स्ट्रक्चर्स, ये ग्लोबुलर स्टेज है, पर यहाँ पे इसमें क्या है, ये 2 कोटिलिडन्स में डिवाइड हो गया है, दिस एंड दिस। सो these are the 2 cotyledons which are formed by the bifurcation of this heart-shaped embryo. So this is the
plumule. Plumule is the part of the embryo which produces shoot part, and this is radical part which produces root system. So this way it will continue growing and it will ultimately become suspensor will keep on pushing the embryo into the endosperm laden tissue, and then this suspensor is going to become shrunken, and this side is radical and this is plumule which is covered with 2 cotyledons. So अब ये मैच्योर एम्ब्रियो है जिसमें सस्पेंसर उतर गया है और इसके रूट के ऊपर रूट कैप आ गई है, और ये इसकी प्लूम्यूल साइड है, ये इसके 2 कोटिलिडन्स हैं। अगर ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मोनोकोट्स की है लाइक ग्रासेस, तो 2 कोटिलिडन्स की बजाय 1 कोटिलिडन ही ग्रो करेगा, सेकेंड कोटिलिडन अंडरडेवलप्ड रह जाएगा। अंडरडेवलप्ड कोटिलिडन ऑफ मोनोकोट्स इज कॉल्ड एपिब्लास्ट।